ये इम्प्रेशन कि लाहौर में हीरा मंडी ही हमेशा से तवाइफ का मरकज़ रहा है, ये गलत है। हीरा मंडी से पहले तवाइफ का मरकज़ चौक मत्ती था, जो लोहारी दरवाजे में मौजूद है। इस चौक का नाम मत्ती बाई के नाम पे है, हु वॉज अ फेमस कोर्टिजान ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इस इलाके में आज भी तवाइफ की बहुत सी हवेलियाँ मौजूद हैं। और ये मरकज़ चौक मत्ती से हीरा मंडी कैसे मुंतकिल हुआ, दैट इज़ अ वेरी sorrowful story about the downfall of one of Indian subcontinent's most important cultural phenomenon, the courtesan. Netflix की recently एक series आई है हीरा मंडी, that has renewed interest in this institution of courtesan and हीरा मंडी. I have personally known the writer of the series, Moin Beg. Moin bhai got in touch with me around 10 years ago. मैंने एक ऐसे लिखा था सोशल मीडिया पे हीरा मंडी पे, एंड ही गॉट इन टच विद मी, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले कुछ 10-12 साल से एक सीरीज़ लिख रहा हूँ हीरा मंडी पे। उसके बाद ही ऑल्सो विजिटेड लाहौर एंड आई शोड हिम अराउंड, उनको हीरा मंडी भी दिखाई, एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स एवर सिंस, एंड आई हैव ट्राइड टू हेल्प हिम व्हेनेवर आई कुड। इस सीरीज़ को हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज़ की वजह से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। कुछ इनएक्यूरेसीज़ हैं भी, but what this series is not getting credit for is challenging and rectifying a lot of inaccuracies and myths that have traditionally been associated with courtesan. Let me explain. Bollywood की हद तक हमारा जो introduction है तवाइफ से, that is through films like Pakiza, Devdas, Mughal-e-Azam, Umrao Jaan, so on and so forth. What you will notice is that these films have shown the Tawaif as oppressed, self-loathing figure, जो हालात की बदकिस्मती की वजह से कोठे की ज़िंदगी में फंस गई है. And ostracized by the society, she is condemned to live a life of loneliness. This traditional image of the Tawaif was a result of the impression that the British had created about them. But nothing can be farther from the truth, because the courtesan was none of the above. In fact, she was very independent, highly accomplished, and that what this series has done differently and correctly. Secondly, the freedom struggle of India has always been painted as a masculine endeavor, which is not true. Courtesans played an important role in the struggle against the British, but their efforts have never been projected. They were at the forefront of the War of 1857 and even in the freedom struggle of the 20th century. And this series again must get credit for acknowledging their efforts in the freedom struggle. So how true is the impression of the British about the Tawaif? One thing to be stated right from the outset, and I cannot stress this enough, कि जो Tawaif है, she should not be and she cannot be confused with a sex worker. ये impression जानबूझ के अंग्रेज़ों ने पैदा किया हुआ था. मिसाल के तौर पे लाहौर में ब्रोथल्स भी थे. तारीख़ी हवालों से दो जगहों का इशारा मिलता है. एक आज का जो अनारकली का इलाका है, उधर का धोबी घाट, वो धोबी घाट आज भी मौजूद है, एक ब्रोथल वहाँ पे होता था. दूसरा ब्रोथल जो था वो मोहल्ला दारा शिको में होता था, जो कि आज के दौर का नौलखा मज़ार का इलाका है. सो दीज टू एंटिटीज़ एग्जिस्टेड सेपरेटली, ये इकट्ठी नहीं थी. You also have to understand the institution of courtesan. This is a very ancient cultural institution, and courtesans had an institutionalized role in the societal framework of Indian subcontinent. Historically, the institution of courtesan was steeped in Hindu religious traditions. The courtesans were considered divine figures in the society who were in the service of the temples. Their performances were a token of devotion to their gods, and they were believed to be married to the idols in their temples. और यही वजह है कि कोर्टिजान्स रिवायत के मुताबिक गैर शादीशुदा रहती थी. दिस इंस्टीट्यूशन वॉज वेरी वेल इवॉल्व्ड, और इसमें बाकायदा अपनी एक हायरार्की होती थी. फॉर एग्जाम्पल देवदासी, गानिका, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हु ऑल हैड देयर ओन फंक्शन डिपेंडिंग ऑन वेयर दे परफॉर्म्ड एंड हु दे परफॉर्म्ड फॉर. और अगर आप ये समझते हैं कि बस एक औरत का तवाइफ बनने के लिए बस यही काफ़ी था कि वो उठ के नाचना शुरू कर दें या गाना शुरू कर दे, तो here is an eye opener for you. Ancient Hindu texts में there are separate chapters that are dedicated to the courtesan. These ancient texts state that in order to be considered accomplished, the courtesan had to be proficient in 64 kind of arts. 64.
These included singing, dancing, playing musical instruments, drawing, writing, decorating, magic, carpentry, tailoring, architecture, chemistry, mineralogy, rules of the society, and how to pay respects and compliments to others. अक्सर मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि एक औरत जो इतने पब्लिक स्फेयर में ऑपरेट करती है एंड केटर्स टू मैन, उसको डिग्निफाइड और नोबल कैसे कहा जा सकता है? तो उसका जवाब भी इन्हीं एंशिएंट टेक्स्ट्स में मौजूद है. These texts state that when fully accomplished in the above arts, a courtesan receives a seat of honor in an assemblage of men. It goes on to state that always respected by the king and praised by learned men, the courtesan becomes an object of universal regard. So these women derived their value primarily from their art and their craft and not their sexuality. जो तवाइफ का institution है, that evolved in India during the Muslim rule as a secular counterpart to the pre-Muslim Hindu courtesan. And with time, the Tawaif became the flag bearer of this institution and the epitome of Indian high culture. The Tawaif was the elite courtesan. She was very exclusive and again, she was considered very noble. इनका business model बड़ा simple था. They were either directly employed by the royal court or if they ran their own salon or their own kotha, they were supported by a patron. And the patron was supposed to be in a relationship with them. But custom ये था और tradition ये थी that they were supposed to remain devoted to their patron. और जब तक वो एक patron से मुंसलिक रहती, they would not entertain another one. And while seduction and sensuality were a natural aspect of their existence, ये उनकी existence का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था. And that too, not for the wider public. तवाइफ का रुतबा सोसाइटी में ऐसा था that they were considered auspicious figures in the society. और किसी भी social function में इनका मौजूद होना उस महफिल की इज्जत में इजाफा कर देता था. इसी तरह, being a patron of a तवाइफ was a symbol of high status in the society for the patron. The patron who was already part of the elite. So आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि what kind of respect तवाइफ enjoyed in the society. Tawaif were artists of the finest superiority and stature, considered to be the epitome of grace and poise. They were deemed an essential asset and central to the court culture. So Tawaif का माशरे में ये रुतबा क्यों था? That's because they were preservers, keepers and disseminators of subcontinent's great civilization. They were poets, they were painters, they were singers, they were dancers, and they were accomplished in literature and philosophy. Their salons were abodes of learning and intellectual discourse too. And owing to their mastery over 64 kind of arts, they were literally walking, talking universities in the field of liberal arts. लेकिन सबसे ज़रूरी ये कि they played a very important role in defining and refining the tastes of the elite and keeping them in touch with their own culture and their own civilization. And because they were the tutors of the royal children as well, they ensured that the future generation, the future rulers of the empire were entrenched in their own culture. मिसाल के तौर पे मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा जो कि मेरे फैमिली आर्काइव्स में दर्ज है. एक दफ़ा महाराजा रंजीत सिंह लाहौर फोर्ट में एक पूल के किनारे बैठ के अपनी एक तवाइफ बशीरन बाई की एक परफॉर्मेंस से महजूज़ हो रहे थे. इसी दौरान मेरे फोर फादर फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन, who also served as the Prime Minister of the Kingdom of Punjab, वो भी इस महफिल में दाखिल हुए. उनका मकसद था महाराजा रंजीत सिंह से को बात करना. लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि महाराजा रंजीत सिंह बशीरन बाई की परफॉर्मेंस में महव हैं, तो उन्होंने ये मुनासिब ना समझा कि वो इंटरप्ट करें और वो पूल के किनारे कुर्सी लगा के वो बैठ गए. बशीरन बाई उस वक़्त हाफिज़ शिराजी का कलाम पढ़ रही थी. हाफिज़ शिराजी 13th सेंचुरी के एक बहुत मशहूर पर्शियन पोइट हैं. परफॉर्मेंस के दौरान बशीरन बाई ने ऐसा समा बांधा कि फ़कीर अजीज़ुद्दीन के ऊपर वज्द तारी हो गया. एंड इन दैट स्टेट ऑफ ट्रांस उन्होंने अल्लाह अकबर का एक नारा मारा और वो बेहोश होके इन दैट ट्रांस लाइक स्टेट ही फेल इनटू द पूल. जिसके बाद परफॉर्मेंस को रोकना पड़ा और लोगों ने रियासत पंजाब के वज़ीर आज़म को खींच के बाहर निकाला. मैं ये वाक़या सुनाने का मकसद जो है वो दो है. एक तो ये कि हाफिज़ शिराजी के सूफियाना कलाम को इस तरह पढ़ना, इस तरह गाना कि जैसे कि उसको पढ़ने का हक़ है, वो सिर्फ एक तवाइफ ही कर सकती थी. और दूसरी बात ये कि महाराजा रंजीत सिंह वॉज एन इलिटरेट मैन. वो बिल्कुल अनपढ़ थे. हैड इट नॉट बीन
बशीरन बाई और द तवाइस, तो हाफिज़ शराजी कौन और सुफियाना कलाम की बारीकियां क्या, महाराजा रंजीत सिंह को इनका क्या पता हो। मेरे नज़दीक जो हमारी प्री कॉलोनियल सिविलाइजेशनल और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, वेयर वी वर द रिचेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, उसके पीछे हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस का बहुत अहम किरदार था। एंड दैट मेक्स द कोर्टिजान अ की फिगर इन इंश्योरिंग दिस सिविलाइजेशनल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज शी वॉज वन ऑफ द मेन कैरियर्स ऑफ आर कल्चरल ट्रेडिशंस। सो इसलिए इन ख़वातीन की माशरे में बहुत इज़्ज़त भी थी और इन्फ्लुएंस भी। मोरा सरकार, द फेम्ड क्वीन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, वॉज अ कोर्टिजान and held immense influence over Maharaja. Begum Samru became the ruler of Sardhana after her husband's death. Hazrat Mahal, Wajid Ali's first wife, played an important role in the War of Independence of 1857. यहाँ तक कि 2 मुग़ल बादशाहों ने भी तवाइफों से शादी कर रखी थी। मुग़ल बादशाह जहानदार शाह ने लाल कुंवर नामी तवाइफ से और नासरुद्दीन मोहम्मद शाह ने कुदसिया बेगम नामी तवाइफ से शादी कर रखी थी। So this indicates that these women were actually considered very noble, because if they weren't, the kings of all the people wouldn't have married them. These non-domestic and non-married women were powerful, independent, subversive, and wielded significant power. They fought in wars and even led diplomatic missions. One such example is Mahalaka Bai, a courtesan in the 18th century Hyderabad, who led negotiations with Maratha rulers on behalf of her king and also fought 3 battles for her state. महाराजा रंजीत सिंह अपने फॉरेन गेस्ट्स के लिए इन तवाइफ से बाकायदा मिलिट्री ड्रिल्स करता होता था। And these women were proficient in even archery, gymnastics, and tent pegging. So not only were these women critical to the cultural landscape of Indian subcontinent, but also the security and political landscape. Not only did they possess immense wealth, but in fact, their wealth was inherited by their own daughters. बल्कि इनकी कम्युनिटी में बेटी के पैदा होने पे बाकायदा जश्न मनाया जाता था। Considering this, अक्सर स्कॉलर्स ये बात कहते हैं कि courtesan was a symbol of female empowerment in Indian subcontinent and that they posed a challenge to the patriarchy. But in my view, they never challenged the patriarchy. Yes, they were symbols of female empowerment, no doubt, but they never challenged the patriarchy. मुझे आज तक कभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चलता हो that they ever tried to undermine the men that they catered to. What they were instead doing was far more nuanced. Instead of erecting a counter-culture to patriarchy or challenging the patriarchy, they were rather controlling it. In their salons, they used to have this spellbinding control over their audience through their talent, through their skill, and through their beauty. And who were their clients? The elite of Indian subcontinent. बल्कि इनमें से बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि रुका लिखती होती थी। रुका यूज्ड टू बी एन एप्लीकेशन, एक सिफारशी नोट होता था। जब किसी भी शख्स का कोई सरकारी काम फंस जाता होता था तो वो शख्स किसी माशरे के इन्फ्लुएंशियल आदमी के पास जाके एक रुका लिखवाता होता था, एक सिफारशी नोट लिखवाता होता था, जिसको पेश करने के बाद उसके काम हो जाते थे। तो ये ख़वातीन बाकायदा रुका भी लिखती होती थी, इनका माशरे में इतना इन्फ्लुएंस था। So naturally, जब ब्रिटिश यहाँ पे पैर जमाना शुरू हुए तो courtesan played a very important role in that period too. And this is where things start getting very interesting, because soon the British started viewing the courtesan as a major threat.